Hi everyone, welcome back to the channel guys. So most of you might be doing self preparation for SEBI grade A और the key component for self preparation जो main हथियार है हमारा जो main औजार है self preparation में that has to be the books. The relevance, the quality of books is very important when you are doing self preparation. So in this video I would be telling you the complete book list whether that is phase 1, phase 2, paper 1, paper 2. From all the angles I would be telling you the book list that you can depend upon to crack this exam. तो बुक लिस्ट बताने से पहले थोड़ा सा वी कैन गो इन टू द बैकग्राउंड. सो इन फेज वन वी हैव पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ क्यूआरए एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और जीए, एंड पेपर टू हैज 6 सब्जेक्ट्स. वी ऑल नो अबाउट देम: कॉमर्स एंड अकाउंट्स, finance, management, economics, company law, and costing. So these are the 6 subjects in your phase 1 paper 2, and the same 6 subjects would be there in the phase 2 paper 2. So they both have same syllabus and same pattern. And in phase 1 paper 1, the subject would be descriptive English, which is a descriptive paper online. So this is an overall scheme. I will not go into the detail of this. तो सबसे पहले हम पेपर 1 फेज 1 से शुरू करते हैं, which is about your QRE GA. देखिए, first of all, you need to understand that this is just qualifying where you need to obtain 30 marks out of 100. That's it. Now, having said that, it's very easy to get 30 marks for somebody who has a lot of experience in quant reason and English, but there might be some people who are not having much exposure to this. For example, chartered accountants or people from commerce background who have not given banking exams in the past. तो आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही टेकन फॉर ग्रांटेड लें और इसकी तैयारी ना करें. सो इन केस यू डोंट हैव मच एक्सपोजर, आप इसको अच्छे से तैयार करें ताकि आप 30 नंबर गारंटीड ले पाएं, बिकॉज योर पेपर टू वुड ऑलरेडी बी अ स्ट्रॉन्ग एरिया, बट यहाँ पे आप फिसल सकते हैं. तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स बताऊंगा. पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है. इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर, आई थिंक यू कैन ईजिली स्कोर 30 मार्क्स इन दिस पेपर. क्वांट के लिए अरुण शर्मा नहीं करनी है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसकी फ़ोटो इसलिए डाली है क्योंकि बहुत सारे लोग जिसको करते हैं, मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल की एक क्वांट की बुक आती है, आर एस अग्रवाल की क्वांट की बुक आती है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज अरुण शर्मा इज हैविंग अ हाई लेवल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर सेबी. अगर आप अरुण शर्मा कर भी रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ लेवल 1 या लेवल 2 तक ही जाएं, लेवल 3 ना करें. लेवल 2 भी वैसे हाई रहेगा. For reasoning, this is a good book, Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. This book contains a lot of topics because it is meant for multiple exams. You need to filter out the topics with respect to SEBI. उसके लिए कुछ नहीं करना है भाई, आपने PYQs देखने हैं या फिर हमारे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं where we have discussed the syllabus which we also have deciphered using PYQs. आप वो देख सकते हैं, या फिर PYQs खुद से देखकर you can filter out the topics that you need to read. इंग्लिश के लिए बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, स्पेशली फॉर द ग्रामर पार्ट, बट आई डोंट थिंक यू नीड दैट. यू कैन जस्ट रिलाई ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग बाय डूइंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश. हाँ, अगर आप वोकैबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक विच यू विल एंजॉय. आई मीन, दिस इज नॉट समथिंग यू शैल स्टडी, रेदर यू शैल एंजॉय रीडिंग दिस. वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. अब ये सारे एडिशंस पुराने हो सकते हैं, द वन आई एम शोइंग यू, यू मस्ट बाय द रिसेंट एडिशंस. बाकी जीए की बात करें तो अगेन जीए इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे रिपोर्ट्स या स्कीम्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है. यू कैन लीव दैट अनलाइक व्हाट हैपेंस इन आरबीआई. तो यहाँ पे आपके 4-5 क्वेश्चंस दे कैन बी रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, लाइक न्यूज़ रिलेटेड आर आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआईडीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू दीज एंटिटीज़. बाकी अदर करंट अफेयर्स आते हैं 10-12 क्वेश्चंस, जिसमें वही बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, स्टैंडर्ड लिस्ट है जो बैंकिंग एग्जाम में भी आती है. तो इसका करने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से, आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की कंपाइल मैगजीन पढ़ लीजिए. एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इन एग्जाम्स के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कंपाइल मैगजीन्स बनाते हैं, एंड मेनी ऑफ देम प्रोवाइडेड फॉर फ्री. आप वो पढ़ लीजिए. साथ में इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा लाइवमिंट देख लीजिए, ठीक है. यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च लाइवमिंट फॉर आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ ओवर द पास्ट 3-4 मंथ्स एंड यू विल गेट ऑल द न्यूज़. उसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए. दिस कैन बी अ गुड बेट. और आपका मेरे हिसाब से जीए में अगर आप 20 में से 10 नंबर ले आए या 8 नंबर ले आए, तो बाकी सेक्शंस में 8-8 नंबर आपके आ ही जाएंगे, बिकॉज पेपर कोई बहुत मुश्किल नहीं आता है. सो दिस इज अबाउट द बुक लिस्ट फॉर phase 1 paper 1. Right now we will discuss about paper 2 which is common in phase 1 and phase 2. तो इसकी क्या बुक लिस्ट है? So सबसे पहले I'll discuss about management part. मैनेजमेंट में फॉर दीज टॉपिक्स
मैनेजमेंट एंड इट्स स्कोप और जो ये सारा है मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं या फिर लीडरशिप है या फिर मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन है, फॉर दैट दिस बुक इज गुड, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एलएम प्रसाद. फॉर एचआरडी देयर माइट बी सम इंफॉर्मेशन हियर बट यू कैन रिलाई ऑन दिस बुक बिकॉज नो यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू कवर 100% ऑफ योर सिलेबस एंड डू नॉट लीव एनीथिंग टू लक. सो ये बुक एक टॉपिक के लिए करनी लग सकता है कि इट्स अ वेरी वास्ट बुक बट इट इज़ वेरी इजी रीड. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, आई वुड से इन 3 to 4 days. जस्ट अ सेल्फ रीड है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और सेलेक्टिव रीडिंग कीजिएगा, थोड़ा पीवाईक्यूज देख लीजिएगा, सिलेबस के टैग्स देख लीजिएगा. सेलेक्टिव रीडिंग वुड बी हेल्पफुल. वेर एवर यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो टू द गूगल. मैनेजमेंट इज वेरी स्कोरिंग. ठीक है. नो कमिंग ऑन टू द कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक बाय एमएन अरोड़ा इज अ गुड बुक. मैंने खुद पढ़ी है ये, सो आई थिंक यू कैन रेफर दैट. देयर आर वेरियस अदर बुक्स ऑल्सो, all are having almost the same information and these are the standard chapters what are given in your syllabus. You will find them in every book. एक बुक और मैं बोलूंगा, मॉडर्न कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय मोहम्मद हनीफ. ये आपको पूरी नहीं पढ़नी है. आई वुड आस्क यू टू प्लीज रीड दिस ओनली. फॉर this from this rather I would ask you to refer lot of MCQs. At the end of each chapter in this book there are MCQs. You can just solve them so as to get more practice and these MCQs are really good. These type of MCQs only right come in your exam. और इसमें भी थोड़ा selective reading कीजिएगा, otherwise these books are very bulky but in line with your syllabus. Now coming on to the costing, in case you want to need in case you want to read some additional information or want to do additional MCQs, then इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लिंक है, ये पता नहीं अब पुराना लिंक है नया है. आई हैव यूज दिस लिंक अ लॉट, अब शायद चेंज हो गया हो, बट आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल में कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 8 और पेपर 10, ये बहुत पुराने लिंक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज दिस इज वॉट आई हैड रेड इन माई टाइम. इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आप इतना तो ढूंढ सकते हैं. But this is good. Paper 8 and paper 10 and paper 15 strategic cost management. आप यही material में से you can find out what is relevant as per your syllabus and you can also attempt lot of MCQs. इसको नहीं भी करेंगे तो these books are going to be sufficient. Then coming on to the finance. Finance के लिए there is no standard book in the market like we have for costing and management, but यहाँ पे ये एक book है भारती पाठक की Indian Financial System. I would not recommend this. This is a very bulky book, but you can also read this in case you want to clear on your basics. But the one book which can help you covering your syllabus is Principles and Practices of Banking by Macmillan Education. ये पुराना एडिशन है, you can buy the new one also, ठीक है, बट इसमें I don't think बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होगा. जो फाइनेंशियल सिस्टम है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर, दैट यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक इन मॉड्यूल ए. इस मॉड्यूल में इस बुक में देर आर मॉड्यूल्स A, B, C like that. Then financial markets, about money market, bond market, equity market, you can read from financial markets module A. इस module A में एक chapter है financial markets. Then financial inclusion, the one which is given here, you can read in this book in module C. You will be able to find these chapters. Then there is another book, Bank Financial Management by Macmillan Education again. So Forex market, you can read it from module A of this book, chapter 1 to 7. And then there is derivatives, right? In the module C, chapter 20. Again, this is an old edition, but you can rely on this. Forex market, derivatives market में कुछ ज़्यादा change नहीं होता है, ठीक है. Otherwise, you can find the recent edition and you can just tag the chapters as per your syllabus. And for these chapters, जो आपके ये chapter है module E and module F, most of these chapters you will find in the economics book by रमेश सिंह, ठीक है. इसका भी recent edition आप buy कीजिएगा, Indian Economy by रमेश सिंह. और ये E और F मॉड्यूल के काफ़ी चैप्टर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिस्कल पॉलिसी, FRBM, फाइनेंस कमीशन, इन्फ्लेशन, you will be able to find in this book. Now the remaining units such as alternate sources of finance, private and social cost benefit, and public-private partnership, this can be done from Google or here and there. If you will search, you will find a lot of information, but these topics are not that important. Not much questions are being asked from it. Now coming on to the Companies Act, right, we have done about management, we have done about finance, and we have done about costing. Now the fourth component I am discussing with you is company law.
Company Act में the point you need to understand is that you have to do limited chapters, the ones which are given here, and the best way to do, I would tell you, is to read from the Bayer Act if you don't have any course with you. सो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसको बेयर एक्ट में पढ़िए. एमसीए की साइट पे यू गो अंडर एक्ट्स, यहाँ पे कंपनीज एक्ट दिया होगा एंड चैप्टर वाइज यू कैन फाइंड इट हेयर एंड यू कैन मैप द चैप्टर्स हेयर लाइक दिस. ठीक है, आप इन चैप्टर्स को बेयर एक्ट से पढ़िए. इट वुड टेक सम टाइम, but then you can search on Google about the meaning of this, about the interpretation of this. Things will get easier once you cover 1 or 2 or 3 chapters. You will be in momentum then. Now, commerce and accounts, it has a very vast syllabus. First of all, NCERT is a good source for this. If you read NCERT class part 1, NCERT class 11 part 1, the few chapters at the start, 1, 2, 3, 6, 7, the ones which are highlighted in yellow here, these are not given in your syllabus, but you need to read them for the basic understanding of commerce and accounts. अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे, you will never be able to understand the further chapters. तो ये तो हमें करना ही करना है. Now, Unit A, Accounting as Financial Information System, this you can read from chapter 12 and 13. Right? Now, coming on to this unit, a cash flow statement, fund flow statement, financial statement analysis and ratio analysis. This you can read from chapter 9, chapter 10, 3, this is NCERT class 12 part 2, right? 4, ratios and cash flow statement. These chapters will help you cover this unit C here, right? So this is NCERT class part 1, 11 part 1, class 11 part 2 and class 12 part 2. 3 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. Now moving ahead, for the rest of the chapters you will not find much in the NCERTs, but yes, accounting for share capital transactions you will find it here. ठीक है. इसके बाद हम बाकी chapters में जाएंगे. So for that you will not find them in NCERTs. The better it is to do from the ICI, Indian Institute of Chartered Accountants of India, not cost accountants, Chartered Accountants of India. तो इनके वेबसाइट पे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल कोर्सेज हैं. यू गो टू द इंटरमीडिएट कोर्स, देयर यू विल फाइंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स. दिस वन यूनिट एफ, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. देन फॉर दिस वन, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, यू कैन रीड अगेन फ्रॉम ICI इंटरमीडिएट मॉड्यूल. ठीक है जी. एंड नाउ द ओनली लेफ्ट पार्ट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज यूनिट नंबर B. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स I would suggest you that you read from book DS Rawat. ठीक है. Accounting standards are tough, but इस book में से थोड़ा आपको समझ आ जाएगा. Again, by the recent edition, you will get to know lot of things about accounting standards. Filter करके पढ़िएगा. Accounting standards are very vast. If you start going in depth of these, you might end up reading for, I would say, 1 month even on one accounting standard. तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से. And there are a lot of videos on YouTube explaining these accounting standards. Just use the book and the video side by side, you will get a better idea. So ये हो गया हमारा commerce and accounts के लिए. Now moving on to the last subject, which is economics. If you see, your economics syllabus is divided into 2 parts basically. Part A is micro, part B is mainly macro. ये वाला part मैं बोलूँगा आप यहाँ से पढ़ लो रमेश सिंह से, the part B. Part A, I would suggest you can read it from Microeconomics, HL Ahuja. ठीक है. तो ये आपके sources हैं. How to read this, how to approach this, what is important, what is not important, I have told you in a separate video. तो आप वहाँ से कर सकते हैं. ठीक है. So this is what I wanted to tell you about phase 1 and phase 2 paper 2. Now moving on to phase 2 paper 1, that is descriptive English, right? अब इसके लिए कोई बुक तो नहीं है, बट आई कैन सजेस्ट यू दैट इफ यू सी द पेपर, लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस, लॉट ऑफ प्रेसेस आर बेसिकली आस्क्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़पेपर में से दे वुड पिक अप एन आर्टिकल, दे विल आस्क यू टू राइट अ प्रेसी और दे विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दैट. देन कॉम्प्रिहेंशन कैन बी फ्रॉम सम अदर बुक्स ऑल्सो, नॉट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. और जो आपके एसेज हैं, दे ऑल्सो कम फ्रॉम द करंट इश्यूज. So I will suggest you reading newspaper for this and not rely on any book which is not required. Read the editorials in Hindu and layman so that you can cover both the social issues and the financial aspects from the layman. So that's it. And this is our complete guide for SEBI Assistant Manager, which will give you a lot of information about SEBI as an organization, promotions, hierarchy, salary and all that. Plus you will also get 3 very important things. You will get to know about the complete syllabus, detailed syllabus analyzed using PYQs. You will also get to know the detailed book list, even more detailed than what I have told you,
and you will also get the PYQs for the SEBI grade A exam, which are very must for you to basically crack this exam. Right, so you can download this. This is entirely free. There is a link in the description of this video. Just click on that link, download this, and read it. This is free, but the information that you will get from this guidebook would be equivalent or even would be more than what you would get from watching 20 videos on different YouTube channels. So thanks, और इसी के साथ I'll take your leave. Best of luck. सेल्फ प्रिपरेशन करो, एग्जाम फोड़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन पूरा प्लान बना के पढ़ो. प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो एंड सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज. ठीक है, जो मैंने बुक्स बताई हैं दे माइट कंटेन लिमिटेड सेट ऑफ एमसीक्यूज, बट यू हैव लॉट ऑफ एमसीक्यूज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. बस फैल जाओ, select your websites wherever you're getting good MCQs and keep searching for different chapters on those websites. You will keep getting quality MCQs. Keep practicing them. Have a nice day. Bye bye. Love you all.